Alright, guys, we'll go ahead with our 29th of June. Niti report on gig economy, the takeaways. फटाफट देखते हैं. In an effort to boost the participation of women in the gig economy, Niti Aayog has proposed that fiscal incentives should be offered to companies in which women and people with disabilities make up about a third of employees. ठीक है. Gig workers are temporary workers who are engaged in livelihoods outside the traditional employer-employee arrangement. Delivery boys, app-based taxi drivers, service providers such as cleaners and technicians, and freelance workers are all part of the gig economy. In a new report, India's booming gig and platform economy, perspectives and recommendations on the future of work described as the first of its kind, नीति आयोग हैज़ ये रिपोर्ट किसकी है भाई? ये गिग इकोनॉमी में बूमिंग बूमिंग गिग, ये किसकी है? नीति आयोग की. Has said that the social security measures such as income support, paid sick leave, insurance and pensions should be extended to people working for platform companies such as Swiggy, Zomato, Ola और Uber. सही बात है, इनको social security ज़रूरी है. Key observations. The report notes that female labor force participation in India has been between 16 to 23% over the last few years. Persons with disabilities have a labor force participation rate of 36%. ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मतलब काफ़ी अच्छा लगा. इसको कहीं नोट कर लो यार, ये कोट करने लायक है. Structural barriers like access to education and lack of skilling have hindered participation of the two demographic groups in the country's labor force, the report says. Based on a survey in urban centers, the report says that women are more likely to take up platform jobs after education and marriage. Oh, मीशो वीशो टाइप की चीज़ें आसान है, मतलब unless they have to just go deliver something on a scooty. नहीं नहीं, मतलब मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, बढ़िया है, चलाओ खूब मस्त, लेकिन मतलब वो उनको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो जाता है ना भाई, घर पे उनको बच्चा बच्चा भी देखना होता है थोड़ा बहुत, तो जो घर बैठ करके किया जा सके अच्छा ही हो. Fiscal incentives such as tax breaks or startup grants may be provided for businesses that provide livelihood opportunities where women constitute a substantial portion, say 30% of their workers. Oh wow. Likewise, a platform with high accessibility or high degree of participation of PWDs to persons with disabilities too may be rewarded with fiscal incentives, says the report. A larger share of women managers and supervisors will also ensure that communication to workers does not perpetuate gender stereotypes, it says. The report recommends that firms should adopt policies that offer old age or retirement plans and insurance cover for contingencies such as injury arising from work that may lead to loss of employment and income. Such plans and policies may be uniquely designed by a firm in partnership with the insurance companies or could be designed and offered in collaboration with the government as envisaged under the Code on Social Security 2020. A social security cover out of a corpus fund can also help gig workers, it says. In addition to insurance cover, businesses should also offer paid sick leave to their workers, it says. Size of gig economy. Niti Aayog estimates that more than 7.5 million workers were engaged in gig economy in 2021. And this number could grow to 23.5 million in the next 8 years, making up 4.1% of all livelihoods in India, which is a significant number. According to the report, at present about 47% of the gig work is in medium skilled jobs, about 22% is in high skilled jobs, and about 31% is in low skilled jobs. अब ठीक है, पहले से जो भी ये है ठीक है, सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आप कर रहे हैं, एजुकेशन अच्छा कर रहे हैं, हेल्थ अच्छा कर रहे हैं, अच्छी बात है, बट उसके असर आने में टाइम लगता है. तो ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, दिस इज़ आई थिंक ट्राइंग टू रेप्लिकेट दी जापानीज़ और चाइनीज़ मॉडल, कि आज आज की आज ही एकदम से आप इनको एजुकेशन दे करके एकदम से सुपरमैन तो बना नहीं देंगे. वो प्रोजेक्ट भी चल रहा है साइड में, बट हाँ, अगर ये लो स्किल्ड जॉब्स भी अगर आप प्रोपोगेट करेंगे ना, तो ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड के अंदर, ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर मतलब राइज आएगा, विच इज़ अ गुड थिंग. सो a nice step. Gig workers can be broadly classified into platform and non-platform workers. Platform workers are those whose work is based on online apps or digital platforms, while non-platform gig workers are generally casual wage workers working part or full time. हाँ भाई, ये भी ध्यान रखना कि भाई मान लो कि ऐसे डेफिनेशन तो नहीं पूछ रहा कोई, बट
वाइल बिकॉज ये बहुत ज़्यादा वोग टर्म है, गिग वर्कर तो आपको लगता है खाली टोपी लगा करके पीछे जोमेटो की टी शर्ट पहन के घूमने वाले गिग वर्कर्स हैं, जो एक तरह के पहले की भाषा में कह लो कि ये कैजुअल लेबरर कहा जाता था ना, जिनको जिनका वो पता ही नहीं है कि नौकरी कोई फिक्स्ड है नहीं कहीं पर, ऐसे ही घूमते रहते हैं इधर उधर कहीं पर, जहाँ पे मिल गया आज की दिहाड़ी का काम हो गया 4 दिन कर लिया, तो वो भी गिग वर्कर्स में ही आते हैं. Significance of report. While platform companies have created avenues of employment, wages are often low, gender participation is unequal, and there is limited scope for upward mobility within the organization. This has triggered protests from workers at companies like Swiggy, Zomato, Ola, Uber, and Urban Company. Gig workers are typically hired by companies on a contractual basis and are not considered their employees. As a result, they do not receive some of the benefits that on-roll employee may have. This means that they often do not receive benefits like paid sick and casual leave, travel and housing allowances, and provident fund savings. The report addresses all these concerns. Nice. ठीक है, हरमिट के बारे में पढ़ लेंगे एक बार, बड़ा आर्टिकल पढ़ने का मन कर रहा है. इन्वर्जन ऑफ जस्टिस, दैट्स व्हाट लिंक्स द केसेस जुबैर गुजरात एंड महाराष्ट्र. ये स्टेट के खिलाफ बोल रहा है, साहब ने ही दिख रहा है, प्रताप भानु मेहता जी नाम है इनका, इनको छोड़ो, काम के नहीं है ये अभी. ये हुई ना बात. 5G. India needs to invest in optical fiber, guard against unfair practices of other countries. ये important है. Internet connectivity is critical for making the Digital India project inclusive, and widespread use of optical fiber in the remotest corners of the country is vital to ensure that no one is left behind in this endeavor. क्यों वो प्रोजेक्ट लून और वो गूगल वो आकाश से इंटरनेट आ रहा था उसका क्या हो रहा है, ये क्यों वापस रिग्रेसिव ऑप्टिकल फाइबर की बात कर रही हैं. With over 117 crore telecom users and more than 82 crore internet subscribers, India is one of the fastest growing markets for digital consumers. A 2019 McKinsey study rated India as the second fastest digitizing economy. Still not fast enough. Digital infrastructure, which seamlessly integrates with physical and traditional infrastructure, is critical to India's growth story and the country's thrust towards self reliance. 5G technology is going to make inroads into the country very soon. Top smartphone manufacturers in India have already released phones with 5G capability. Networking equipment that relies on optical fiber and other semiconductor based device ecosystems are at the heart of building the infrastructure that will be needed when the country takes the next step in its digital journey. ठीक है जी, मतलब समझिए devices और network दोनों ही चाहिए. The government has taken several measures to build the next generation of digital infrastructure. आगे बढ़ने से पहले जल्दी से अपने दिमाग में सोचें क्या क्या किया है. वो कौन सी PLI स्कीम है, कोई PM वाणी स्कीम की बात चल रही है, और भारत नेट को लगाने की बात चल रही है, और 5G वगैरह भी अब कर रहे हैं, तो ऐसे लगा लो फटाफट. But the success of initiatives such as BharatNet Phase 3 and the world's largest rural broadband project, which aimed to provide broadband connectivity to all 2.5 lakh gram panchayats across the country, hinge on the deployment of high quality fiber. A basic requirement of 5G will be data transmission networks. Optical fiber is the backbone of the digital infrastructure required for this purpose. The data is transmitted by light pulses traveling through long strands of thin fiber. Indian manufacturers have a strong presence across the value chain of this industry. In the last 10 years, domestic manufacturers invested more than rupees 5,000 crore in this industry, which has generated direct and indirect employment for around 4 lakh individuals. India exported optical fiber worth $138 million to over 132 countries between April 2020 and November 2021. India's annual optic fiber manufacturing capacity is around 100 million fiber kilometer, and the domestic consumption is around 46 million. आधे हम खुद ही खा जाते हैं. Good, really nice. Indian optical fiber cable consumption is predicted to increase to 33 million FKM by 2026 from 17 million FKM in 2021. क्या consumption? Okay. हमको इससे ज़्यादा भूख लगने वाली है. A little more than 30% of mobile towers have fiber connectivity. Oh, this needs to be scaled up to at least 80%. तो यार एक बार जल्दी से पता लगाना कि, और कमेंट भी कर देना यार भाई,
कि मैंने भी पढ़ा नहीं है, मैं भी पढ़ लूँगा तुम्हारे को देख के, कि ये मतलब ये बोल रही हैं कि फाइबर वाले मोबाइल टावर्स खाली इतने ही हैं, तो जो बाकी बचे हुए हैं वो कैसे चल रहे हैं, कहने का मतलब। ओके। In anticipation of this demand, domestic manufacturers have been ramping up their capacities over the last few years. However, India's optical fiber industry has also seen unfair competition from cheap imports from China, Indonesia, and South Korea. These countries have been dumping their products in India at rates lower than the market price. The World Trade Organization defines dumping as an international price discrimination situation in which the price of a product offered in the importing country is less than the price of that product in the exporting country's market. सिंपल सी लाइन है, बढ़िया है लिखने के लिए, कहीं पर ज़रूरत पड़ जाए तो. Imposing anti-dumping duties is one way of protecting the domestic industry. The Directorate General of Trade Remedies (DGTR) has recently begun investigations against optical fiber imports. One hopes that the probe will also catalyze other efforts to encourage local manufacturing. India needs to invest in R&D, research and development, offer production-linked incentive schemes to support indigenous high-tech manufacturing, and develop intellectual property in critical aspects of digital connectivity. हाँ ना, मतलब पूरा फ्रेमवर्क एक साथ ही बने तो, मतलब पूरा इकोसिस्टम एक साथ बने तो अच्छा है ना. जैसे अभी कुछ टाइम पहले कोई स्कीम की बात चल रही थी, इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफर किया कि जो भी हमारे यहाँ पर आकर के चिप्स बनाएगा उनको हम देंगे चिप्स माने आलू वाले लेस नहीं भाई, वो जो भी होती है वो कनेक्शन वाली, वो वैसी वाली यार, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स. तो उसको हम पता नहीं कितने पैसे दे देंगे, फैसिलिटी दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे, ताकि वी कैन स्केल अप आवर थिंग्स. और इससे रिलेटेड अगर जानना चाहो तो अपने यहाँ पर अभी स्पेशली ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, 2-3 महीने तक पहले भी कोविड हिट की वजह से ही जो गाड़ियों के अंदर डिले हो रहा था और गाड़ियों का मार्केट डाउन था और डिमांड मतलब पूरी नहीं हो पा रही थी, उसका कारण यही था, मतलब माइक्रो चिप्स नहीं थे हमारे पास में. हमारे पास में है नहीं मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, तो इसलिए तो अब वो कर रहे हैं, तो ये फाइबर वाला काम भी साथ ही कर लो तो मतलब सोने पे सुहागा हो जाएगा सर. The digital infrastructure created in the process could serve as a springboard for our growth in the next 20 years. We are at a crossroads now. The need of the hour is to unlock the full potential of India's optical fiber industry and enable India to emerge as a major manufacturing and technology hub while achieving Atmanirbharta in its 5G journey. My God, ये एक शब्द ने जो ऐसा इफेक्ट डाला है ना, my God. चलो ये यूक्रेन वाला देखें क्या. द इनएविटेबिलिटी ऑफ अग्निपथ, यार वो यूक्रेन वाला देखेंगे, आगे एक G7 के बारे में कुछ आया है उसके साथ में देखेंगे दोनों को. इनएविटेबिलिटी ऑफ अग्निपथ, रिक्रूटमेंट रिफॉर्म मस्ट बी सीन अलोंगसाइड अदर डिफेंस. नहीं सॉरी, एक ही चीज़ को बार बार रगड़ने से मतलब नहीं है. ये अंकल ने क्या लिखा है समझ नहीं आ रहा है, एक बार पढ़ लेते हैं फटाफट, ऊपर से तो समझ आ ही नहीं रहा है. क्या कहा देखो इन्होंने, ओल्ड एस्टैब्लिशमेंट इन द डॉक, इट इज़ नॉट इन ऑफिस बट इज स्टिल इन पावर, दैट्स द रियल प्रॉब्लम. ठीक है, आ जाओ. ओके, द आर्टिकल मीडिया इन द डॉक बाय जॉन ब्रिट्टास i.e. June 9 is in part laced with innuendo and partly a veiled account of his exasperation with the common people's temerity to think for themselves and deviate from the roadmap drawn by an intellectual oligarchy that has been in power since independence. शशि थरूर का भाई लग रहा है भाई हो तो. और फिर इन्होंने लिखा भी इसी आर्टिकल के बारे में. चलो और कोशिश करते हैं. Being in power doesn't necessarily mean being in office and vice versa, correct? Though it has been out of office for almost 8 years, the left liberal pack is still in power. It continues to control public discourse in India. Left. The Nupur Sharma Naveen Jindal controversy is the latest example underlining the power of this nexus that cuts across continents, ideologies and creeds. Blind hatred of Prime Minister Narendra Modi and angst against a rising India. Excuse me. Okay, the blind hatred of Prime Minister Narendra Modi and angst against a rising India are its glue. The Nupur Naveen duo is accused of blasphemy and hate speech. Within hours of the alleged blasphemy, video clips of their statements were resonating across continents, unilateral trials conducted, and guilt pronounced.
followed by a clamor to punish them. Isn't this real global networking? गालता सही है. One question in this context begs an answer. Has anyone explained what was hateful or blasphemous in what was said? यार अब ये सब्जेक्टिव बात है, मैंने एग्जैक्टली देखा भी नहीं है, पर जहाँ से सुना है लोगों से मुंह से कि भाई क्या क्या बोला गया, तो अच्छा तो नहीं कहा था मेरे ख्याल में उन्होंने भी. वर्स देयर इज़ अ कावरिंग साइलेंस ओवर द डेथ एंड रेप थ्रेट्स टू शर्मा. हाँ, ये भी बहुत ही गलत बात है, हद से ही ज़्यादा. मतलब ये क्या तरीका है? मतलब हम इतने इतने ज़्यादा, मतलब इतने रिग्रेसिव, अपने इतने पुराने विचारों के क्या यार हम. ये तो मेरे ख्याल में ट्राइबल लोग करते थे ना, कोई पसंद नहीं आया, किसी की बात पसंद नहीं आई, उसको रेप कर दिया हमने. मतलब ये जो भी है. And these aren't empty threats. In the recent past in India, several innocents such as Kamlesh, accused of blasphemy, have met violent death at the hands of zealots. Britas, however, is right when he says the अभी बोला था left है. Britas, however, is right when he says the Ram Janambhoomi movement led by the Sangh Parivar changed the media scape drastically. This movement no doubt triggered a cerebral revolution in the country. Cerebral दिमाग में हो गया. The national debate that followed the years-long struggle for a Ram temple in Ayodhya helped explode many myths, raised questions about ideologically constructed paradigms, reconnected common people with their hoary past, and unshackled large sections of society from narrow doctrinal confines and encouraged them to look for facts about their history and identity. वाई इज देयर एनी कन्फ्यूजन? अभी तक मतलब इनको पता ही नहीं था लोगों को हमारी हिस्ट्री भी कुछ है. अभी एकदम से इनको याद आ गया, ओफ हमारी हिस्ट्री. वाई इज देयर एनी कन्फ्यूजन अबाउट नेशनल आइडेंटिटी और हिस्ट्री इन द फर्स्ट प्लेस? कन्फ्यूजन ही क्यों है भाई? पढ़ो ना किताब जाके आर एस शर्मा जी की. A little recap. After independence, with help from a complicit acquiescing establishment, the left managed to become the sole arbiter on values like secularism, pluralism, human rights, JNU की बात कर रहे हैं, एंड इंडिविजुअल लिबर्टी इन द इंडियन पब्लिक डिस्कोर्स. मतलब खाली वही बता सकते हैं सही क्या है गलत क्या है, सेक्युलर क्या है क्या नहीं है, प्लूरल क्या है क्या नहीं है, ह्यूमन राइट्स कौन से हैं कौन से नहीं है. लॉ हो गया. एंड देयर कुडंट हैव बीन अ बिगर जोक. द लेफ्ट अलॉन्ग विद द ब्रिटिश एंड द मुस्लिम लीग was the prime mover for the creation of a theocratic Pakistan. It is now a high priest of secularism in India. अच्छा. Communism believes in the supremacy of the proletariat and has contempt for human rights. सोशियोलॉजी वाले ध्यान से पढ़ें इस आर्टिकल को वापस से एक बार. Communism believes in the supremacy of the proletariat and has contempt for human rights. Communism के अंदर human rights के against contempt. Violence is central to communist working and the system is notorious for quashing dissent ruthlessly. नहीं, आई डोंट कम्प्लीटली एग्री विद यू सर. आप बहुत वैल्यू लेडन बात कर रहे हैं तो चलो कोई नहीं. द ब्रांड ऑफ सेक्युलरिज्म वी यूजुअली सी इन प्रैक्टिस इन इंडिया हैज जर्मिनेटेड इन अ कम्युनिस्ट पेट्री डिश एंड इज फ्लेवर्ड बाय अ पाकिस्तानी माइंडसेट. Pakistan isn't only a country, it's an idea that transcends borders. An Indian passport holder too can have a Pakistani mindset. The debate kick-started by अरे फालतू की आग उगल रहे हैं यार, रहने दो इनको, नहीं पढ़ रहे इनकी बात. ओके, ये काम की चीज़. शेयर ऑफ फीमेल borrowers in bank loans drops slightly. गलत बात है. The share of female borrowers in the total individual credit outstanding in the banking sector declined marginally to 22.54% in FY22 and 22.65%. बहुत छोटा सा. However, total credit outstanding of women rose, from 10 लाख से 13 लाख करीबन. तो सर 14 ही लाख हो गए. लाख करोड़. लाख करोड़. 10.27 से 11.7 lakh crore as of March 2022, according to the latest RBI data. According to the RBI, as much as 6.64 lakh crore of female borrowings were personal loans, while housing loans accounted by rupees 3.80 lakh crore. The total number of credit accounts of female borrowers were 9.12 crore as against 8.66 crore last year. Female borrowers outstanding in the agriculture credit was rupees 3.28 lakh crore in 4.
28 crore accounts and rupees 33. चुप, कुछ मतलब परसेंटेज बताओ ना यार. Most banks offer discount to women on home loans, which are considered as safe credit avenue by bankers. ठीक है. On the other hand, male borrowers account for rupees 40.20 lakh crore credit outstanding through 70. अच्छा इनका कितना था यार, ये कंपैरिजन ऐसे टेबल में हो पाएगा. Total individual credit outstanding including male and female borrowers rose to 51.9 lakh crore in 26.59 crore accounts in FY 2022 as against जो भी है यार, क्या नंबर नहीं मजा आ रहा, छोड़ो इसे. Some opposition states seek tweak in revenue sharing formula. Mukesh Ambani passes on the Geo mental to Akash. हाँ भाई. काश. पालोनजी मिस्त्री मैन विद आई फॉर इंडिया स्क्रोच स्टोरी. अब खाली एक वो वर्ल्ड वाला बचता है. Nuke deal talks with US on. Iran applies to BRICS. ये क्या कर रहा है भाई? An activist with Ocean Rebellion walks to take part in a protest outside the UN Ocean Conference in Lisbon, Portugal, co-hosted by Kenya and Portugal. The conference, which began Monday, will end on July 1. Oh, nice. यार इनका sense of humor sexy है. Sri Lanka to end fuel duopoly to ease crisis. ठीक है यार, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं G7 वाला.